Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine at your homes. I'm also fine. Today I'm here with something new for you. So take out your prayer 3 maths book and open page number 112. Now we have a page over here and we have a lot of numbers and the spellings of the numbers, some blanks and some icons as usual. So let's read the icons first. This is read and write. So we have to read and write on this page and then write the date in the date section. Now let's read the numbers with me, which is 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. So we have these numbers over here and we have the spellings of these numbers और इसी के सामने numbers की spellings भी दी हुई हैं. So which is, let's see the first spelling, which is T H I R T Y 30. O N E 1 31. So here is the spelling of 31 and we are going to write the same spelling in the given blank. और इसी तरह हमारे पास बहुत सारी spellings दी हुई हैं, but as you know कि हमें तो 30 की स्पेलिंग अच्छे से याद है ना, 30 तो हमने पहले भी याद किया था और अगर आप देखें गौर से तो इन सब नंबर्स में मोस्टली 30 आ रहा है और जो नेक्स्ट नंबर है वो भी हमें आता है 1, 2, 3 till 9 हमें ये भी स्पेलिंग्स आती हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी ना लिखने में ना याद करने में. बट वी हैव another new spelling too. So we are going to read the spelling. So here we have the spelling of 31, 32, 33 and the spelling of 34 is over here, 35, 36, then 37, 38, 39 and 40. Here is the new spelling. ये तो हमने पहले याद नहीं की ना, तो अब हम कर लेते हैं. The spelling of 40 is F O R T Y 40. So we are going to write the spelling of 40 in the given blank. जो 40 के सामने blank दिया हुआ है, we are going to fill up the blank with the spelling of 40. तो अब हमें अच्छे से सारी स्पेलिंग्स भी याद हो गई हैं ना, सारी हमने रीड आउट कर ली हैं और हम उसके सामने लिखने भी वाले हैं, तो अच्छे से हमने ये स्पेलिंग्स याद कर लेनी है और नीटली लिख देनी है and we are going to remember these spellings. Okay, now this page is done. Let's move on to the next page, which is page number 113. Now kids, we have a new page और यहाँ पर again we have the same numbers 31, 32 so on till 40 और यहाँ पर हमारे पास spellings भी दी हुई हैं numbers की. First read the icons with me. This is read and match and then write the date in the date section. ठीक है, जिस दिन हम ये काम कर रहे होंगे उस दिन की डेट मेंशन कर देंगे. नाउ किड्स लुक केयरफुली, वी हैव अ नंबर लाइन अगेन. हमारे पास देखिए नंबर्स दिए हुए हैं 31, 32 जो हमने पहले भी पढ़े और सामने हमें कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं जो कि एनी नंबर्स की हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द करेक्ट नंबर एंड देन वी आर गोइंग टू match the number with the same spelling and one is done for us, which is over here. Number 40 is matched with the spelling of 40 because we are doing the same work in this page. So with the help of a pencil we are going to trace this line and same like this we are going to match the other numbers with the same spellings.
This page is done. This was so easy. Now move on to the last page, which is page number 114. Now we have something new. अब हमें इन्हीं नंबर्स के साथ कुछ नया गेम खेलना है. Blanks गेम खेलना है हमें यहाँ पर, ठीक है. First read the icons with me. This is read. This is write. So we are going to read something on this page and write something on this page. And don't forget to write the date in the date section. Now kids, look over here. We have the same numbers in the boxes 31, 32 until 40. और यहाँ पर हमें कुछ blanks भी दी हुई हैं और आगे हमें कुछ boxes भी दिए हुए हैं जिसमें इनकी spellings लिखी हुई हैं. दोबारा हमें spellings का एक गेम खेलना है मगर कुछ different तरीके से. This is really interesting. Look carefully kids. We have some blanks over here. So what we are going to do? We are going to find out the correct spelling from the boxes and then fill up the given blanks. First one is done for you, which is the spelling of 31. T H I R T Y 30. O N E 1 31. So यहाँ पर ये spelling भी हमने complete कर ली, read कर ली. Now let's see the next number, which is number 32. Let's find out the spelling of number 32. Where is the spelling? Okay, here is the spelling of 32, which is T H I R T Y 30. T W O 2. So we are going to write the spelling in front of the number 32. This is really simple and easy. I hope you can done it. या आप अच्छे से कर लेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे बाकी सारा. This work is done over here. Don't forget to remember the spellings. So see you in the next class. Go to your mama and teacher and show them your work and then close this book and put it in your bags. Take care. Allah Hafiz.